Assalamu alaikum guys, my name is Mayan and I welcome you all to my channel. So today we are going to start section 3 from our O-level physics syllabus, that is waves. And today we are going to discuss topic 3.1, that is general properties of waves. Okay, before we understand general or some basic properties of waves, we need to understand what actually waves are. So at this level, we don't need to understand the definition of waves in detail because it's a very detailed topic in physics. We just have to have a basic idea that waves are energy carriers or disturbances that travel through a medium and carry their energy along. So definition, if we talk about definition of physics, definition of waves, waves are energy carriers that cause oscillations, or we can say them in a better word, periodic disturbances in a medium. Till now, examiner hasn't asked about the definition of a wave. Rather, he focuses mainly on general properties of waves. But we need to know that waves are energy carriers that cause periodic disturbances, or in easy words, oscillations in a medium. Now let's discuss about some general properties of waves. Property number one is states that waves travel in a straight line. Waves travel in a straight line. This means that waves have a linear motion and they do not bend or form a curvature while moving. Property number two is waves carry their energy along with them. वेव्स अपनी एनर्जी अपने साथ एक स्ट्रेट लाइन में एक लीनियर मोशन में लेकर चलती हैं. प्रॉपर्टी नंबर थ्री इज द एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी नंबर टू के while entering a medium, waves transfer their energy to the particles of the medium. Waves transfer their energy to the particles of a medium, either it's solid, liquid, or gas, in the direction of their motion. इस बात का मतलब ये हुआ कि वेव्स अपनी एनर्जी पार्टिकल्स को जिस मीडियम से पास हो रही है उस मीडियम के पार्टिकल्स को, वेदर इट्स दे आर पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनको ट्रांसफर करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रही हो. And the continuation of this property is during this
there is no overall transfer of the medium. यानी पार्टिकल्स जिस मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो खुद ट्रांसफर नहीं होंगे, वो खुद आगे मूव नहीं करेंगे, वो वाइब्रेट करेंगे और आगे वेव को ट्रांसफर करेंगे, एनर्जी ट्रांसफर करेंगे. Generally we have seen the wave like this. This is not a wave, this is a pattern or pattern of oscillation of particles created by a wave. और वो होता कुछ इस तरह के, let's assume this is a wall and a rope is attached with this wall. When we pass a wave, the wave move forward, and during this it transfers its energy to the further particles. ये पार्टिकल्स की मोशन है, ये पार्टिकल्स की ऑसिलेशन है जो वेव क्रिएट कर रही है. ये खुद वेव नहीं है, वेव का फॉर्म है, वेव पैटर्न है. Okay, so let's summarize what we have discussed today. First of all, we discussed that what are waves. Waves are energy carriers that cause oscillations in a medium, periodic disturbances in a medium. वेव्स की जनरल प्रॉपर्टीज में हमने सबसे पहले पढ़ा कि वेव्स का मोशन एक लीनियर मोशन होता है. दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे डू नॉट बेंड और फॉर्म अ कर्वेचर व्हाइल ट्रैवलिंग. दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि वेव्स कैरी देयर एनर्जी अलोंग विद देम. तीसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि जब वेव किसी मीडियम से पास होती है तो अपनी एनर्जी उस मीडियम के पार्टिकल्स को दे देती है. इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम. ड्यूरिंग दिस द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट मूव ओवरऑल, they vibrate about their fixed position. That's all from my side today, and in further videos we are going to deep dig this topic and study in further detail. Thank you so much. Allah Hafiz.